Hello, my dear students and friends. So, welcome to our lecture 2 on unit and measurement for your class 11 NEET and JEE. So, this is theory class, and in this class I will be quickly discussing on different accuracy, precision, error and unit dimension analysis. Okay. So, let's discuss about this accuracy and precision. What is accurate? So, every instrument you are using for measurement of any length, mass, etc., there is a uncertainty in the measurement. That uncertainty is called error. Okay. So, later I will be explaining different types of error, random error, systematic error. Okay. So, accuracy is accuracy is how much closely you are, how much close, मतलब how much close to the true value you are measuring. So this is true value. So इसको हम underline ये करते हैं. So what is true value? So if you are measuring a length of this rod, let I am saying this is 15.31 mm. Okay, by using स्क्रू गेज जस्ट मैंने लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किए थे. सो बाय एनी प्रिसाइज डिवाइस और मोर एक्यूरेट डिवाइस यू कैन हैव टू मेजर अप टू 315 लेट. Then someone claim that this is 3156, someone claim that then 7, someone claim this is 18. So what is true value? So precisely telling we don't know the true value. That's why. So up to what digit this is accepting for explaining physical and everything, that is accepted as true value, है ना. हमको इतना दूर से कम से मतलब है, बाकी लेने से कोई जरूरत नहीं. बाकी लेने से कोई हमारा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा या बहुत ज्यादा सिस्टम फेल्यूर नहीं होगा. दैट्स मच वी कैन एक्सेप्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू. एंड अंडर ये जो है आपका जो है ये दिस इज अंडरलाइन, है ना. So actually true value is something different. Someone is claiming 31, then someone is claiming, so there is a long infinite numbers. But if you are taking 5131 and your आपका काम चल जा रहा है ना, so that's why you can take and you आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो you can take it as a true value. So by measurement technique, my measurement device, if you are measuring near about true value, this is called accuracy. So close to true value is called accuracy. मतलब आप accurately measure कर रहे हो. Now आप एक इंस्ट्रूमेंट से जो है, और प्रिसिशन क्या है, आप कितना रेजोलेंस से वो आप मेजर कर रहे हो उसको बोलते हैं प्रिसिशन. सो लेट्स एक्सप्लेनिंग. दिस इज योर and this I am explaining this lecture is not only for your class 11 and everything, but this lecture is also for your graduation and everything. So this concept and everything is in your error analysis and everything, it is also in your graduation classes, है ना. So if your point is this is your true value, okay, this is your true value, and if you are measuring somewhat here by instrument 1, so this is your instrument 1. By using instrument 1, if you are measuring different point, so this portion you are measuring, so this space point is close to each other, okay. So but this is far more from true value. So here you can claim it, this is not accurate but precise. मतलब आप यहाँ का इसका जो रिजोल्यूशन है ना, यहाँ का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है. मतलब आप एवरी पॉइंट का आप मेजर कर रहे हो, आप यहाँ पे सेम जगह पे. So that's why this is called, this is precise but not accurate. So किसी एक इंस्ट्रूमेंट से आप, so यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू है 3.5, है ना. So by some instrument you are measuring 3.15, 3.13, 3.16, 3.17. So this your resolution is 0.01. Okay.
सो ये आप इस रेजोल्यूशन मेजर करो, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट. बट by using another instrument, if you are measuring instrument 2, if you are measuring this is 3.4, 3.5, 3.6, 3.3, that this is close to your true value. This is close to your true value means this is accurate. बट इसका रेजोल्यूशन कितना है 0.1. सो इसका रेजोल्यूशन 0.01. तो इसका रेजोल्यूशन अच्छा है मीन्स दिस इज प्रिसाइज मेजरमेंट बट नॉट एक्यूरेट. बट यहाँ पे आपका जो है ये मान लीजिए यहाँ पे 3.4, यहाँ पे 3.5 है. सो ये नियर टू योर ट्रू वैल्यू. ओके, सो दिस इज एक्यूरेट बट दिस रेजोल्यूशन इज 0.1. दैट्स व्हाई दिस इज एक्यूरेट बट not precise. So this is the basic difference between accuracy and precision. Okay, अभी जो डिस्कस करेंगे different types of errors है ना, systematic errors and random errors. What is systematic error? Because of your instrumental errors, so your instrumental is wrong, or instrumental is damaged, misplaced, or misaligned everything. So due to instrumental error there is some error is occurring called the systematic error है ना. and imperfect जो आप technique आप you are using, that technique is not to be precise and not too much accurate to measure the quantity, and there is some wrong in technique also. So imperfection in technique is also responsible for your systematic error. And there is your personal error and different types of, so when you are measuring this device measurement, so some disturbance is there, some noise and everything. So you could not precisely take the data at the instant or at you constantly. So due to personal error there will be systematic. So by you improving your instrument, the robust instrument, your techniques and your perfection in measurement, you can avoid this systematic error. But in case of random error, random मतलब randomly, so random error is your, it is coming, it is you cannot avoid this. So this is coming due to random and unpredictable fluctuation, like your voltage है ना, voltage, temperature, वाइब्रेशन. सो आप जब इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इलेक्ट्रॉनिक से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहां पे आपका आप देखेंगे वोल्टेज का स्लाइट फ्लक्चुएशन है, दैट यू कैन नॉट अवॉइड है ना. टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ समथिंग, सो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है ना, नेचर से आता है. और वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन हो रहे हैं कहीं से है ना, कहीं मोटर चल रहा है तो यहाँ का आपका वाइब्रेशन हो रहा है. सो दैट वाइब्रेशन इज रैंडम एंड एवरीथिंग. सो दिस एरर यू कैन नॉट अवॉइड है ना. बट इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब इसको आप जो है इसका एरर आप कैलकुलेट कर सकते हो, रैंडम एरर कितना है. सो रैंडम एरर आपका जो है आप फिर आप करेक्शन टर्म डाल सकते हो, मतलब कितना एरर आपको करेक्शन करना है वो आप कर सकते हो. सो नाउ ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर तो हुआ. अब इस एरर का जो है हम क्वांटिफिकेशन करेंगे. क्या एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर है ना, और आपका जो है परसेंटेज एरर. सो व्हाट इज, सो लेट्स ये एरर कैलकुलेशन करने से पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज ट्रू वैल्यू है ना. पहले हमने बताया ऐसा ट्रू वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, बट जितना ट्रू वैल्यू लेने से हम ना हमारे काम चल जाएगा, दैट मच you can consider as this is your true value. So true value is you can consider if you are taking large number of measurement है ना. So let's say you are measuring a length x1, x2, x3, n numbers of measurement आप ले रहे हो. So true value you can call average. So this is your xi over जो है ये n, ये number of n. So this is total number of इसका जो है ये summation जो है ना, इसका x1 plus x2 plus dot 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 xn over n, you can calculate this. So why average is, why
average is your true value, because in some measurement this is someone, if your true value is like 3.5, so you can sometime it is 3.4, sometimes 6, some 3.3, 3.7. So some data is underestimated and some data are overestimated. So in nature it is likely to be underestimated and overestimated. So this is your Gaussian distribution. Okay, some data will be overestimated and underestimated. So if you average it, then you can, this is your true value. So that's why you can take average of this data. So that is called this is true value, है ना? This is likely to be overestimated and underestimated. So what is your really, what is your absolute error? So if your true value is x prime, so absolute error is x1 minus x prime, x2 minus x जो है x3 minus x एवरेज. तो ये आपका जो है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर है ना, ये एब्सोल्यूट एरर है ना. सो ये एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर ये कितना होगा? x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस ये करके इसका एवरेज, ये नंबर्स ऑफ मेजरमेंट है ना. सो समहाउ यू कैन टेक इज xi माइनस x एवरेज, ये n नंबर्स ऑफ है ना बाई n. तो ये आपका जो है मीन जो है मीन एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हैं इसको. इसको लेट्स डिफाइन इज योर एप्सिलॉन. सो रिलेटिव, व्हाट इज रिलेटिव एरर? Relative error, it is defined as your mean absolute error over x bar, जो आपका true value है ना. This is relative error. And percentage error मतलब कितना एरर में ये कितना परसेंटेज, ये तो एरर इतना एरर हुआ ओवर योर ट्रू वैल्यू है ना. सो परसेंटेज एरर होगा आपका ये एप्सिलॉन ओवर एक्स बार into 100. So this is your percentage error. Okay, so this is absolute error, mean relative error and this is your percentage error. Okay, अभी जो डिस्कस करेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर है ना. सो किसी भी एक मेजरमेंट में आपका जो है डिफरेंट क्वांटिटीज रहते हैं. मान लीजिए आपका डेंसिटी है ना, दिस इज योर डेंसिटी, दिस इज योर मास ओवर वॉल्यूम. So there is two quantity, mass and volume. So there is a uncertainty in mass also, there is a error, yeah, uncertainty in volume also. So how much percentage error and how much is there is some error in mass and some error in volume also. So दोनों का एरर किस तरीके से रो में मतलब आपका डेंसिटी में प्रोपागेट करता है ना. सो इसका जीन है ना, दोनों का जीन कैसे इसका जो है प्रोडक्ट में कैसे उसका ट्रांसफर होगा है ना. सो वो उसका रूल्स क्या है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपागेशन ऑफ एरर है ना. सो हम एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे x इक्वल टू a प्लस बी. सो यू आर मेजरिंग टू क्वांटिटी है ना. सो इसमें जो है आपका परसेंटेज एरर जो है आपका इसमें क्या होगा आपका, सो डेल्टा x और बाई x है ना. सो डेल्टा एक्स ओवर एक्स इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी. सो ये क्या है आपका, दिस इज योर जो है आपका ये रिलेटिव एरर है ना. ये टोटल ये रिलेटिव एरर ओवर ये आपका मीन वैल्यू और ये आपका इसका भी मीन वैल्यू, इसका मीन वैल्यू, ये रिलेटिव एरर. सो अगर ये माइनस होता तो दिस इज योर ए माइनस बी, तब क्या होगा आपका डेल्टा एक्स ओवर एक्स होगा डेल्टा ए ओवर ए माइनस डेल्टा बी ओवर बी, नॉट माइनस. एरर के केस में क्या होगा,
टोटल एरर जो है आपका मैक्सिमम एरर इसमें होता है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। मैक्सिमम कितना एरर ये होता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो उसमें आपका जो है प्लस हो जाएगा। सो वेदर इट इज प्लस और माइनस, टोटल एरर जो है आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इफ योर एक्स इक्वल टू ए बी, वो कैसे होगा? सो उस केस में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? दिस इज योर लॉग एक्स इक्वल टू, लॉग लेना है ना, लॉग ए प्लस log b. Okay, so you then differentiate with respect to x, है ना, dd x. So 1 upon x इक्वल टू ये क्या होगा आपका 1 upon a dA dx प्लस 1 upon b dB dx, है ना, और dx को इधर लेके आइए। सो dx ओवर x इक्वल टू dA ओवर a एंड dB ओवर d हुआ। सो ये d बेसिकली डेल्टा। सो अगर ये मल्टीप्लिकेशन है सो आपको इस तरीके से एरर प्रोपोगेट करेगा। अगर इसके ऊपर m है, इसके ऊपर n है, क्या होगा? सो उस केस में क्या होगा आपका? सो वो आपका कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इस तरीके से अगर है तो इस टाइप का प्रॉब्लम में करने के लिए देता है ना। सो दिस टाइप इज m log a प्लस n log b, देन क्या होगा आपका? ये होगा dx ओवर x इक्वल टू m dA ओवर a प्लस n dB बाई b, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो है एरर प्रोपोगेट करेगा, है ना। अगर ये मान लीजिए x इक्वल टू a ओवर b, तब इसमें क्या होगा? dx ओवर जो है log क्या होगा आपका? log लेने से क्या होगा? log x इक्वल टू log a माइनस log b। ओके, अब इस केस में dx और डेल्टा x जो भी आप मान लीजिए, है ना, dx ओवर x इक्वल टू जो है आपका dA ओवर a, यहाँ पे भी सेम मैक्सिमम परसेंटेज इसमें प्लस होगा dB ओवर b। सो इस तरीके से आपका जो है एरर प्रोपोगेट करते हैं, है ना। सो इस तरीके से अगर एरर ये ऐसा प्रॉब्लम अगर करने के लिए देगा, एक बड़ा इक्वेशन दे दिया ए टू द पावर ए एम बी सी टू द पावर एन, तो इसमें सबका परसेंटेज एरर बोल दिया, है ना। सो आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकाल सकते हो ना, है ना। यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो। रिलेटिव एरर आपने बता दिया या परसेंटेज एरर आपने बता दिया। सो आपको टोटल एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स in terms of different quantities a b c you can calculate. Okay, so now different types of measurement you are doing, percentage error you are doing, then you have to measure significant figure, significant digit। क्या है significant figure? ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? मतलब आप जो है आपका किसी भी एक मेजरमेंट में आप मान लीजिए x 125.7, टोटल सिग्निफिकेंट क्या है आपको जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज योर 4। 125 इज योर सर्टेन, ये निश्चित, एंड देयर इज अनसर्टेनिटी इन दिस पोर्शन, दिस इज uncertain. So total certain and uncertain quantities for this is significant figure. Okay, so let's add 5 and plus 2.1. So how much will be? So obviously you will be doing 5 plus 2 is 7.1, but in terms of significant figure, what is significant figure here? 1. Here significant figure is 2. So minimum what is 1? So minimum significant is 1, मतलब यहाँ आपको in terms of significant figure में आपको 7 लिखना है ना। So इतना ही आप certainly measure कर सकते हो because there is another uncertainty. Okay,
So this is if you're just 10 by 4.0. So how much it will be? This will be 2.5, because here significant figure is 2 and here significant figure is 2. So that's why you can write 2.5. ओके, सो ये इस तरीके से जो है आपको सिग्निफिकेंट फिगर, ये मल्टीप्लिकेशन एंड एवरीथिंग आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे 2.12 इंटू 2.32 इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए ये 4 पॉइंट समथिंग 1258 कुछ भी ऐसा आप 50 डिजिट आप लिख दोगे, ऐसा आप लिख नहीं सकते हो। कितना आपका सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इधर भी सिग्निफिकेंट फिगर 3। मान लीजिए आपको 2 डिजिट तक ही आपको लिखना है, मतलब इधर भी 1 2 3 इतना ही लिखना है, नॉट जो कैलकुलेटर में जितना आ रहा है उतना हम कैलकुलेट करके उतना तो कुछ भी लिख दोगे तो वो। सो दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रू टेक्निक्स इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। नाउ राउंड ऑफ है ना, आपने राउंड ऑफ तो किए है ना, तो राउंड ऑफ का जो है ये तो आपने बचपन से सीखे हैं। सो मान लीजिए ये 1.67 एंड 1.56 है, इसका राउंड ऑफ कितना होगा? यहाँ पे देखिए जस्ट सी हियर, सो सेकेंड डिजिट में 7, सो दिस इज ग्रेटर देन 5 और एक लिखता हूँ 1.54, तो इसका राउंड ऑफ ग्रेटर देन 5 मीन्स 6 के साथ 1.7 होगा, बट दिस इज योर इवन। सो अगर इवन होगा सो दिस विल बी 1.6 ओनली, बट यहाँ पे देखिए दिस वन इज ऑड एंड दिस इज योर ग्रेटर देन 5, देन इट विल बी 1.6। बट यहाँ पे देखिए ये ऑड तो है बट इट इज लेस देन, इट इज जो है लेस देन जो है आपका इज लेस देन 5, सो दैट्स व्हाई इट विल बी 1.5। सो आपको देखना है जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट डिजिट इफ इट इज ग्रेटर देन 5, बट जहां तक करना ये इट इज इवन then it will be 1.6 only, it will remain in 1.6, but if it is odd then and the next digit is greater than 5 then it will be 1.6, and if next digit is less than 5 then it will remain 1.5 only. So this is round off. अभी जो डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सो any physical quantity can be explained in terms of dimension. Okay, so if it is your length, this is dimension is length. If it is your mass, this is in terms of third bracket mass, and if it is time, so any derived unit or any physical quantity will be explained in terms of dimension. So velocity, let's see, this is velocity. Velocity is length over time. Okay, this is your length, so this is your L t to the power minus 1. This is the dimension of velocity. Acceleration L t to the power minus 2. Okay, so you know mg is equal to half m square, है ना? Check whether it is correct or not. So dimensional homogeneity is important for correctness of any equations. So from dimensional and homogeneity means dimension of left hand side of an equation equal to right hand side of equation. इस इक्वेशन से आप देख लीजिए इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। सो इफ योर m g is your L t to the power minus 2 and h is your L, okay, so equal to your half m and v is your L t to the power minus 1, जो है ये भी 2 है ये भी 2 है, so m t to the power minus 2 आया, so दोनों का डायमेंशन मैच कर रहे हैं, है ना? कांस्टेंट को, सो फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस यू can't get information of
कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में पता नहीं कर सकते। अच्छा, सो आप देखिए एक ये हमने एक इक्वेशन दिया है जो है आपका लेट एक्स इक्वल टू जो है आपका ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स 1/x² फैक्टोरियल 2, ये इस टाइप में ये जाएगा ना। सो इसका जो है आपका x का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे देखिए 1 इज डायमेंशन क्वालिटी एंड इफ x इज हैविंग एनी डायमेंशन देन इट्स स्क्वायर डायमेंशन, सब किसी भी इक्वेशन में है ना हर टर्म का जो है डायमेंशन सेम होगा। तो इसका डायमेंशन 0, इसका अगर सो x should not have any dimension, because if x is having dimension then this equation will not be valid, but we know e to the power x equal to this series na, so x e to the power x should not have any dimension. So from dimensional homogeneity, sometimes you cannot explain your direction that from dimensional homogeneity you cannot explain deduction, because this constant you know the force equal to gm1 m2 over r square, where g is not only constant but it also has a dimension. That's why from dimensional analysis you cannot deduce this equation. So let's deduce an equation of time period etc. You know, so let's say we don't know the equation of time period, है ना, let's deduce an equation of your time period. Okay, what is your time period of your, you know the equation na, but let's see we don't know the equation. So time period in terms of L है ना, length of the length and is your G and in terms of your M. Okay, so अब यहाँ पे जो है आपका from dimensional analysis you can have, let's have a constant, some constant k. So from dimensional analysis you can write L to the power 0, M to the power 0 and your T to the power 1 equal to k is dimensionless quantity, L to the power 1, G is L T to the power minus 2. So let's see, there is L to the power x, है ना, x, this is your T is x, this is y, this is your z. So this is your y and M is your in terms of z, है ना. So x, y, z you don't know the what is the number and everything. So in terms of this by using dimensional analysis you can deduce the number of x, y and z. Okay, so match the equation here. So L x is your 0 है ना, और this is your ना x and y, x plus y है ना इधर, so this is your x plus y equal to 0 and y coefficient is, y coefficient मतलब ये जो है आपका t का आप देख लीजिए है ना, minus twice y equal to जो है आपका t का this is 1. Okay, and m to the power m to the power z, so m equal to z equal to 0, so y equal to minus half and then your x equal to plus half, so t equal to root over of L over C. Okay, g to the power y means minus half है ना, y के जो है, so अब you from dimension you cannot get the twice pi,
So that's why. So you know the, so आप ये आपका concept twice by root over of L by G. So from dimensional analysis you can deduce the equation here. So in next class I will be also discussing some problem set, है ना. यहाँ से different छोटा छोटा problem आता है from error analysis, screw pitch, etc. and dimension of this quantity. And what is the dimension of जो है आपका S equal to R theta. थीटा का dimension क्या है बताइए. S is meter, R is also meter, theta is in जो है radian, in this is theta is dimensionless quantity. Okay, so in this lecture, so I have discussed about what point? What point? Unit, different types of the system of units, derived, primary unit, error, propagation of errors and dimension analysis. ठीक है, पढ़ते रहिए. प्रॉब्लम सेट भी हम ये कर देंगे, अपलोड कर देंगे, है ना. ठीक है, ओके, थैंक यू.